Hello friends, welcome to ProTalent and I'm Nitin Parmar. My dear students, SET 2024 announcements are out. You can start filling the form. ठीक है, SET is for Symbiosis. We all know that Symbiosis International University has this exam called SET. So in this video, I'm going to talk about all important admission details, exam dates, and we'll also, you can say, quickly talk about this syllabus part. However, I will be making a separate video on how to prepare for SET. What are the important part of the SET exam? सबसे पहला चीज, SET is meant for an entrance examination for Symbiosis group of colleges, that is Symbiosis International University. There are a lot of courses, बहुत सारे courses है और उसमें जाने के लिए SET exam है. This year onwards, Symbiosis has implemented NEP. Just like you can say NMIMS has introduced NEP, everyone is now slowly adding this idea of new education policy. Okay, new education policy is a very simple policy wherein you have a freedom to enter a college and you have a freedom to leave a college. That means if you are entering into a college and you complete your first year, you want to exit, you get certificate. You appear for first year and second year and you want to exit after second year, then you get a diploma. You exit after third year, then you get a degree. You want to continue for fourth year and then leave, then you get honors degree. Clear hai? ठीक है, चलिए बढ़िया. So that's NEPs they started. At the same time, you exited after let's say first year and then you want to come back within 3 years. ठीक है, to complete your degree, you can. So this is how the flexibility provided in new education policy and that's a wonderful thing. ठीक है. However, here our focus is on SET. हम फोकस कर रहे हैं SET के बारे में बिकॉज प्राइमरली ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बहुत लिमिटेड सिचुएशन में आप सब लोगों को अप्लाई होगा. आप ज़्यादातर फोकस करेंगे कि अपना डिग्री खत्म करें एंड देन पॉसिबली यू कैन से गो फॉर योर मास्टर्स डिग्री. बट एनीवे, सो व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल टू यू टू गेट इनटू BCA or BBA IT or to get into BBA? Now BBA is available to you in Symbiosis Pune, Symbiosis Noida, Symbiosis हैदराबाद, बेंगलुरु, ठीक है, एंड नागपुर. ये सब जगह पे आपको मिलेगा. सो वन इज इन पुणे, अदर इज इन नोएडा, ठीक है, देन यू हैव नागपुर, बेंगलुरु एंड हैदराबाद. दिस आर द ऑप्शंस अवेलेबल फॉर यू फॉर BBA प्रोग्राम. ठीक है. इसके अलावा यू कैन ऑल्सो गो फॉर BSc इकोनॉमिक्स करके, that's available in Pune. You want to go for marketing and mass communication, so there is a wonderful college available in Pune which is called that is Symbiosis Center for Media and Communication. ठीक है. You want to get into data science, that's also available. You want to get into IT, that's also available. So these are the varieties of the option, and liberal studies is also one of the option available. So there are so many, you can say, colleges, so many courses, so many campuses. One exam, SET, you must appear for it. ठीक है. Now what is the process? What is the admission process? Very simple. You appear for SET test. ठीक है. That is, you have 2 chances to appear for. You can say appear and then what was the best of the score, that is counted for shortlisting for the next stage. Okay. आपका shortlist होगा for PI and then the final selection will take place. So that means you have 2 things. One, you appear for the test. Shortlisted candidates will be appearing for PI and then they will be coming for the final selection. I hope it is very clear. Great. What are the dates? The dates are very simple. Examination dates are 2. One is 5th of May and other is 11th of May. Symbiosis entrance test, 5th of May and 11th of May, and this you have to appear between 11:30 to 12:30 PM. सुबह 11:30 से 12:30. Total number of questions are 60 divided into 4 sections. General English, quantitative and general awareness will have 16 questions each, and then logical reasoning will have 12 questions. General English will comprise of all major areas. कभी कभार RC आता है, कभी कभार नहीं आता है, but majorly it's a vocab based paper. Vocab, synonym, antonym, fill in the blank, grammar based questions are available. That's how the 16 questions are divided. ठीक है. Majorly they want to ask questions on parts of speeches in the grammar. ठीक है. That is all this Ivan Kemp, interjection, conjunction, adjective, adverb, those kind of questions. They also ask questions on figure of speech
ठीक है, एंड देन सम क्वेश्चंस ऑन वोकैब, सम क्वेश्चंस ऑन यू कैन से RC, then quantitative 16 questions, all basic areas, arithmetic, simple interest, compound interest, ठीक है, percentage, profit loss, work and time, times with distance, ratios, problems on ages, mixture allegation, ठीक है, set theory, okay, some part of geometry, ठीक है, some part of algebra, equation solve करना, those are the kind of questions available. In general awareness, they ask questions on all areas. Okay, so that is all important issues connected to India, connected to the international world, and those questions, ठीक है, which is Indian Constitution, that is polity related, Indian history related, geography related, awards, sports, and those are the areas. In logical reasoning, they majorly ask questions on series, coding decoding, ठीक है, direction sense test, ठीक है, blood relationship, those are the kind of questions available. Those arrangement based questions are also available. Syllogism is also available. So this is how the idea is. Total 60 questions and there are no negative marking. There are no negative marking, ठीक है. So 60 questions, 60 minutes. Keep that in mind. It's a 60 question, 60 minute quick exam. You have to be good at your speed. ओके, प्रैक्टिस ज़्यादा करना ज़रूरी है दोस्तों, ये ध्यान रहे. दिस इज ऑन May 5th एंड 11th of May. ओके, दैट्स हाउ द एग्जाम इज. ठीक है, मेरिट लिस्ट का डिक्लेरेशन किस बेसिस के ऊपर होगा? ऑब्वियसली एसईटी के ऊपर होगा. आप जो भी स्टूडेंट्स एसईटी क्लियर करेंगे उन्हीं लोगों का इंटरव्यू होगा, सबका इंटरव्यू नहीं होगा. Not all students will be called for interview. Only those students who have cleared, got certain cutoff marks in SET, they will be called for interview. And once you appear for your interview, your entire selection will be based on this. 70% weightage will be given to your entrance test, that is SET. Okay? And then 30% weightage will be given to PI. 70:30 का रेशियो सब एग्जाम में लगेगा, सब कोर्स में लगेगा. BBA, दैट इज BBA पुणे, BBA नोएडा, BBA नागपुर, ठीक है, ओके, BBA बेंगलुरु, BBA हैदराबाद. दोस्तों ये ध्यान रहे, जितने भी कोर्सेज आप अप्लाई करना चाहते हैं विथ एसईटी, ठीक है, जितने भी कोर्सेज आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका अलग से पेमेंट होगा. लेट मी एक्सप्लेन दिस. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू आर फिलिंग द फॉर्म, यू पे फीस फॉर एसईटी. आप एसईटी का फीस पे करेंगे, ठीक है, प्लस आपने सिलेक्ट किया कोर्सेस. ओके, अगर आपने सिलेक्ट किया बीबीए कोर्स, 1 इन पुणे, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, 1 इन पुणे, 1 इन अगेन से नोएडा, 1 इन हैदराबाद, 1 इन बैंगलोर, आपने 4 अप्लाई किया, ठीक है, प्लस यू वांट टू गो आल्सो फॉर इकोनॉमिक्स कोर्स, 5 अप्लाई किया. सो पर कोर्स यू विल हैव टू पे सेपरेटली. सो दैट्स अ 5,000 रुपीज पर कोर्स, 1,000 रुपीज, 5,000 रुपीज इज व्हाट यू हैव टू पे. एसईटी का फीस प्लस इंस्टीट्यूट या प्रोग्राम का फीस. ओके, प्रोग्राम फीस. Okay, this is how you will have to appear for. Is that very clear to everyone? So आपका जो वेटेज होगा, ये जो इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट में आपको पीआई देने जाना होगा क्योंकि आपने इंडिविजुअली पेमेंट किया हुआ है सब जगह. सो देयर इज अ सेपरेट इंटरव्यू एट एवरी प्लेस. नाउ वेदर दिस इंटरव्यू विल टेक प्लेस इन पुणे इटसेल्फ और इट विल बी ऑनलाइन इंटरव्यू, वी डोंट नो टुडे. ठीक है, अभी तक ऐसा माना जा रहा है इट्स एन ऑनलाइन. क्राइस्ट ने चीज़ें चेंज करी है, सो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट और उसके बेसिस के ऊपर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा. इज दैट वेरी क्लियर? समझ में आया दोस्तों? ठीक है, अगर आपने मास कम्युनिकेशन का कोर्स अप्लाई किया है विच इज कॉल्ड बीए मास कम्युनिकेशन, तो आपका एसईटी का वेटेज इज 50, पीआई का वेटेज इज 30, वैट का वेटेज इज 10%, and there is a something called portfolio or a studio test. A separate instruction will be provided to develop this studio test. उसमें क्या होगा, आपको कोई एक इवेंट दी जाएगी, वो इवेंट का हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाकर उसका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या उसका पीडीएफ या उसका कोई वीडियो फॉर्मेट ऐसा कुछ आपको बनाना होगा और उसके बेसिस के ऊपर मतलब वो आपका जो सबमिशन होगा उसका वेटेज होगा आपका 10%. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, सो एसईटी का वेटेज होगा 50%, पीआई का वेटेज है 30%, वैट दैट इज ऐसे राइटिंग प्लस स्टूडियो टेस्ट का वेटेज है 10%. इज दैट क्लियर? चलिए, बहुत अच्छी बात है. ठीक है, सो दिस इज व्हाट दिस सिम्बायोसिस एग्जामिनेशन ऑल अबाउट. नोटिफिकेशन आ चुकी है, ठीक है, मेक श्योर दैट यू गो थ्रू दिस एंटायर आइडिया. एग्जामिनेशन में क्या मेजर चेंजेस है उसको ध्यान में रखते हुए अपना ये फॉर्म भरने की कोशिश करिए. ठीक है, इन केस यू हैव एनी क्वेरी
related to this, ठीक है, you can be in touch with us, ठीक है, we will be helping you out with all this information. Last date क्या है इसकी? April 12th April is the last date to fill the form, ठीक है. एग्जाम डेट मैंने आपको बता दी 5th of May and 11th of May, ठीक है. In case you have any questions, feel free and be in touch with us. We'll be in a position to guide you in a proper way about this. Okay? Chali, great. So with this, I'm closing this video. All the best for your preparation for SET.